Hello, 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 hello. नहीं आ रही।
या तो नहीं, इस बार टीचर से बेटर है। ठीक है, हाँ बैठिए। कनेक्शन वापस पूछ रहे हैं, कंप्यूटर है कि नहीं, सेम वाईफाई से।
मेन जो हमेशा लाइव रहेगा। हाँ ये रहेगा ओके, बट नाउ आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग, इट ऑलरेडी लाइव है। ठीक है।
ये फोन कैमरा इधर एक्ट कर रहा है, फुटेज लैपटॉप में जा रही है। बार तो ये काम करो, उसमें म्यूजिक लॉगिन है, उसमें म्यूजिक लॉगिन है 30 वाला। तो जब गाना इस वाले फोन में थोड़ा सा मैं चेक करूँ क्या, जो सीधी जगह के साथ लाइव जाते हैं, बट अब हो चुका ना, 2 मिनट बंद हो जाएगा अभी तो, कौन सा कार्यक्रम वो सब फोन है। तो अगर आप कर लीजिए, सुनिए, तो बैकग्राउंड में रहने दीजिएगा, इनकेस शुरू हो जाता है आप इसे कर लीजिएगा, इससे उसको मत कीजिएगा कि नया प्लेटफॉर्म की चांस पे ट्राई करेंगे अभी जल्दी नहीं ना मेरे पास। ये बताओ प्लेस करके यहाँ का क्या नाम है? अरे यार क्या नाम है बताओ मुझे। बोले या आप मैनेज कीजिए। हाँ फेसबुक लाइक ना उसी से होगा। हो रहा है, हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है ना, वो लाइक करते नहीं बोला है, डेज में। कोई पास से तो स्टार्ट है। ठीक है। स्किल सेंटर के बारे में। हाँ लिंक जी, अभी और करें थोड़ी देर में। आप देखे जाएंगे पहले के पेज पे जाएंगे। हाँ डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश का नहीं नहीं लखनऊ। अच्छा लखनऊ। Good morning, everyone. We are about to begin the program. I would like to invite Professor Matriya Priyadarshini ma'am, Professor Surya Pratap Dikshit sir, Professor Nishi Pandey ma'am, Shri Shraddhanand Harinandan Singh ji, Professor Omkar Nath Upadhyay ji, Dr. Satish Rai ji on the stage for the commencement of the program. Also, I would like to invite Dr. Amit Kumar Mishra ji on the stage for the commencement of the program.
है ना ये आप करोगे लॉक क्यों बस एकदम सही करें। Warm greetings to everyone present here. It is indeed a great pleasure to be amidst this August gathering. I, Dr. Pariti Kishore, Assistant Professor, Department of English and Modern European Languages, extend my heartfelt welcome to all the eminent academicians and dignitaries gracing the occasion by their benign presence. I proudly welcome you all to 3 days International, Interdisciplinary and Multilingual Seminar, Girmitiya, Descendants, Past, Present and Future. To make this event a blessed one, let's invoke Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. This ritual, steeped in profound symbolism, represents our journey from ignorance to knowledge, inviting, illuminating wisdom. I would like to invite the esteemed dignitaries on the stage for the lamp lighting ceremony. या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती नीच सदा जापहा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमा आद्यां जगत् व्यापिनी धीरापुस्तकधारिणी भयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्वातिक
वन्देदा परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदाम्। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को। गीत जिंदगी के सीखे जिसके आंचल में, गुणवंत सिद्धांत जहाँ वैज्ञानिक राखे, उड़ते नए क्षितिज बहुरंगी जहाँ निरंतर मिलती विविध दृष्टियाँ निगिन विषयों पर, दीनत हमारा मस्तक इस विद्या मंदिर को। अर्पित पुष्प हमारे इस धर्म भूमि को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। भाव बुद्धि मन भूमते विकसित जहाँ हमारे, मूल सभ्यता संस्कृत के हो मुखरित सारे। सीखा पाठ जहाँ हमने समता ममता का, सहिष्णुता सहयोग देना और विवेक का। अर्चन नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को, वंदन प्रणत हमारा इस शुभ परिसर को। शत शत नमन हमारा इस ज्ञान स्रोत को, इस ज्ञान स्रोत को, इस ज्ञान स्रोत को। Salutations to the light of the Lamb, which brings auspiciousness, health, and prosperity. Now I would like to invite our organizing secretary, Professor Omkar Nath Upadhyay sir, to present memento to our dignitaries as a token of gratitude and welcome them. कार्यक्रम को जन्म भारत में वापस आने के लिए घुमाना पड़ेगा बाइक से। ऐसे आगे पीछे यहाँ पर ऐसे यूजर कंट्रोल।
उधर क्या हो गया, उधर वो चेंज होता रहेगा। ऐसा पता नहीं क्या ये करके जा रहा है, करके जा रहा हूँ। घूम रहा है यहाँ पे आकर भैया मैं आगे To begin with the inaugural ceremony, let me briefly introduce Global Girmit Association, which is popularly known as GGA, and it is in the process to register as a non-governmental organization in New York and India. Its agenda includes to have colony chapters in various diaspora countries around the world. Also, it becomes important to throw some light on the Department of English and Modern European Languages, University of Lucknow, Center of Indian Diaspora and Cultural Studies, and ICSSR. The Department of English and Modern European Languages was established in 1921, is a major research, postgraduate, and undergraduate department of the University of Lucknow. The department has a rich tradition of high-level teaching and research and has been working towards enriching and strengthening literary and language studies. The Center of Indian Diaspora and Cultural Studies was established in 2021 in the Department of English and Modern European Languages as a major project funded by Government of Uttar Pradesh, India. The objective of the center is to engage in research and advanced studies, placing the focus on understanding modern diasporic identities in context of geopolitical, economic, and demographic changes spanning the 20th and 21st centuries. The Indian Council for Social Science Research, ICSSR, is a premier organization in India dedicated to promoting and funding social science researches. ICSSR was established in 1969 and operates under the Ministry of Education. Now I would like to invite the head Department of English and Modern European Languages, University of Lucknow, Professor Multilingual ma'am, for welcome address. Good morning, everyone. Jai Shri Ram. I welcome you all for the International Conference on Girmitiya, Descendants, Past, Present, and Future, organized by Center of Indian Diaspora and Cultural Studies in association with Department of English and Modern European Languages, University of Lucknow, sponsored by Indian Council for Social Science and Research, New Delhi. I'm grateful to our Honorable Vice Chancellor, Professor Alok Kumar Rai, for giving us this opportunity. I am extremely grateful to Dr. Satish Kumar Rai, Professor S.P. Dikshit, keynote speaker, Shri Shraddhanandan Haribandhan Singh ji, our guest of honor, and Dr. Amit Kumar Mishra, our chief guest, for taking out time to enrich our students with their expertise and profound knowledge. I also would like to extend my gratitude to all the guests for being a part of the event. This gathering marks a significant milestone in our collective pursuit of comprehending the multifaceted aspects of the history, current realities, and future trajectories of the Girmitiya diaspora.
Our seminar embarks on a journey through time, beginning with a historical lens, scrutinize the social, economic, cultural, and political factors that shaped the Girmitiya migration. We will delve into the experiences of Girmitiya communities, unraveling their trials, contributions, and remarkable resilience during the indenture period. Shifting our focus to contemporary times, we will analyze present-day socio-economic, cultural, and political dynamics within Girmitiya communities worldwide. A pivotal facet of our discussions will be the exploration of challenges and accomplishments in preserving Girmitiya cultural heritage and identity. We will underscore the significance of cultural preservation and identity maintenance among Girmitiya descendants, examining the evaluation of traditions, languages, and customs across generations. Looking forward, our discussions will extend to the aspiration and goals of the younger generation within Girmitiya communities. We will explore the role of global connections, diaspora networks, and transnational collaborations in shaping the future of Girmitiya descendants. The seminar is more than a gathering of minds. It is a hub for scholarly exchange, fostering collaboration, and encouraging researchers to share their work, findings, and methodologies related to Girmitiya studies. Our aim is to facilitate collaborations between academic institutions, community organizations, and individuals interested in Girmitiya history and diaspora studies. The International Seminar on Girmitiya Descendants aspires to create a comprehensive and inclusive space for dialogue, collaboration, and knowledge exchange. Through our collective efforts, we aim to foster a profound understanding of past, present, and future of Girmitiya communities worldwide. I am confident that the discussions and collaborations over the next few days will significantly enrich Girmitiya studies and deepen our shared understanding of this remarkable diaspora. Welcome, and I look forward to enlightening discussions that await us. I again welcome you all being here with us. Thank you. Thank you, ma'am, for your support and enthusiasm. Now I would like to invite Professor Nishi Pandey, ma'am, Professor of Eminence, Department of English and Modern European Languages, to discuss the concept note of the seminar and introduce the dignitaries on the stage. Good morning, ladies and gentlemen. Respected members present on the dais. I would like at the outset to convey the Vice Chancellor's regret that he has been involved in the meeting and was therefore delayed and was unable to make it. He said that he would try to come and has conveyed his good wishes for the success of the conference. We have on stage with us some very eminent people. The keynote lectures are going to be given by Professor Surya Prasad Dikshit, former Head Department of Hindi and Modern Indian Languages, University of Lucknow. The presidential address by Shraddhanand Harinandan Singh, CEO of the Kalapani Academia International, Suriname. We also have as chief guest Dr. Amit Kumar Mishra, and I would briefly like to introduce the guests to you. Shraddhanand Harinandan Singh is a PhD. He's retired, 80, feeling very, very nostalgic and emotional today because he says that he's been here. His grandfather has seen this, and therefore, when he was getting the gift of the Ram Mandir, from the Ram Mandir, and the being felicitated, everything came rushing back to him. He is a social change manager and social educator. For the last 6 years, he's been a freelance columnist, essayist, and political analyst, and is actively involved in the global Girmitiya community studies.
He belongs to the fifth generation of his maternal grandparents, who entered Suriname in 1895 as indentured servants. In 1976, with like-minded people, he founded the National Welfare Foundation, Lala Rook, Netherlands, to plead the Suriname culture in the Netherlands and to advocate integration based on Hindustani identity. Professor Surya Prasad Dikshit is known for his work and contribution towards Indian journalism and literature. He's an Indian journalism and literature educator, recipient of the Sahitya Bhushan and Doctor of Divinity Upadhyay Award, UP Government Lucknow in 1998 and 2002. He's president of the Sarvahit Vidyadham Lucknow since 1998. He's a member of the Hindi Sahitya Sammelan Allahabad Sahitya Vachaspati Award and the secretary. He is part of the KK Birla Foundation, and he's been president since 1998, and the Ram Mohan Ray Foundation. We at the University of Lucknow have been very fortunate, especially me. I would like to pay my special regards to him because he was our teacher, someone we looked up to, someone from whom we learned a lot, and who's always contributed not just to Hindi and journalism studies, but also to English and other languages. And I do remember that he was the valedictory speaker for the Indian Association of English Studies conference way back in the 90s when we invited him. And he had given us a very rousing and important lecture which changed the way we began to look at English studies and begin to think about translation to be brought center stage. We also have with us Dr. Amit Kumar Mishra. Dr. Amit Kumar Mishra is our chief guest today, and he is an associate professor at the School of Global Affairs. He earned his doctoral degree from the Center for Historical Studies at JNU, focusing on the Indian labor diaspora in Mauritius. Dr. Mishra's research interests encompass Indian labor diaspora, causes and consequences of labor mobility, histories of labor intermediation, culinary cultures, the statutory negotiations of diasporic Indians, and reading transnational migration from perspectives of state and society. He's currently finalizing a manuscript on reading the movement of Indian indentured laborers from the perspectives of global history. He has won the first Chancellor's Award for Excellence in Teaching and Research. He was a fellow at the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, a consultant for the Truth and Justice Commission, Government of Mauritius, and a visiting fellow, Foundation Maison des Sciences de l'Homme, Paris, France. Dr. Mishra has authored several books, articles, and book chapters. Dr. Satish Rai, the person who brings this all together. Dr. Satish Rai is a Sydney-based author, a film and TV producer, an academic, journalist, and community development professional. Dr. Rai has made some 50 films and over 300 television programs, traveling widely in India, Fiji, Australia, and the UK. He has written substantially on Fijian global Girmit issues. Presently, Dr. Rai is writing novels and articles and coordinating international efforts on several projects for the global Girmitiya communities in the diaspora and in India. And this conference is one such effort. A global Girmitiya, he is also writing the first ever curriculum for global Girmit studies, a global Girmit educational curriculum for an online academy. He is the founder of the Indian Diaspora Council, Australia, and president of the Global Girmit Association. I warmly welcome all of you gentlemen to the conference, and would now like to read out to you the concept note of what the conference will be about. The International Seminar on Girmitiya Descendants, Past, Present, and Future seeks to unite scholars, researchers, community leaders, and individuals intrigued by the diverse dimensions of the history, current status, and future outlook of the Girmitiya diaspora. The term Girmitiya refers to indentured laborers transported to various corners of the world during the 19th and early 20th century.
primarily from the Indian subcontinent, to toil on sugarcane plantations. The seminar's objectives span historical exploration, aiming to scrutinize the socio-economic, cultural, and political factors that underpinned the Girmitiya migration. Delving into the indenture period, the focus extends to understanding the experiences of Girmitiya communities, encompassing their trials, contributions, and resilience. Transitioning to contemporary times, the seminar will analyze the present-day socio-economic, cultural, and political dynamics within Girmitiya communities globally. An exploration of challenges and accomplishments in preserving Girmitiya cultural heritage and identity forms another crucial facet. The significance of cultural preservation and identity maintenance among Girmitiya descendants will be underscored, examining the evolution of traditions, languages, and cultures and customs across generations. Community empowerment takes center stage, involving an assessment of present socio-economic challenges faced by Girmitiya communities and the discussion of strategies for empowerment. Additionally, successful community initiatives contributing to the well-being and development of Girmitiya descendants will be highlighted. Future prospects, especially the aspirations and goals of the younger generation within the Girmitiya communities, will be explored. The role of global connections, diaspora networks, and transnational collaborations in shaping the future of Girmitiya descendants will also be discussed. The seminar aims to be a hub for scholarly exchange, fostering collaboration by encouraging researchers to share their work, findings, and methodologies related to Girmitiya studies. The facilitation of collaborations between academic institutions, community organizations, and individuals interested in Girmitiya history and diaspora studies is a key objective. Moreover, the seminar will actively engage in raising public awareness about the historical significance of Girmitiya migration and advocate for the recognition of Girmitiya contributions to the societies they settled in, emphasizing the imperative need for preserving their stories and heritage. In sum, the International Seminar on Girmitiya Descendants aspires to create a comprehensive and inclusive space for dialogue, collaboration, and knowledge exchange, fostering a profound understanding of the past, present, and future of Girmitiya communities worldwide. On behalf of the Department of English, I cordially welcome all the participants, all the speakers, and we wish you a wonderful session in the next 3 days. Thank you, ma'am, for gracing the occasion. We are delighted to have our distinguished dignitaries on the stage for the book launch, Indigenization in Multiculturality by Shri Shraddhanand Harinandan Singh Ji and The Age of Trauma by Dr. Satish Rai Ji. Also, प्रवासी साहित्यकार हंसादीप का कहानी साहित्य by Dr. Deepak Pandey ji and Dr. Nudan Pandey ji. एक साथ दिखाएंगे।
ठीक से मस्ती। Thank you, everyone. Now I invite Professor Surya Pratap Dikshit sir, former Head Department of Hindi and Modern Indian Languages, University of Lucknow, for the keynote lecture. Sir, your presence has elevated the significance of the occasion. We are truly honored to have you here. इस समारोह के अध्यक्ष आदरणीय श्रद्धानंद जी, समारोह के मुख्य समागत आदरणीय अमित मिश्र जी, मंच पर विराजमान जिनकी परिकल्पना आज प्रतिफलित हो रही है, अंग्रेजी विभाग की पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर ऋषि पांडे जी, अंग्रेजी विभाग की वर्तमान अध्यक्ष प्रोफेसर प्रियदर्शनी जी, कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर उपाध्याय जी, देश और देशांतर से, सात समुद्र पार से, देश के कोने कोने से पधारे हुए प्रतिभागीगण, विद्वजन, हमारे शिक्षक साथियों और पूरे छात्र छात्राओं, सचमुच बड़े सौभाग्य का क्षण है। हम सबके लिए हर्ष और गर्व का विषय है। ये गिरमिट समाज आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज दाना पानी की खोज में इस देश से बाहर गए थे। उस समय हमारा देश गुर्बत की चरम सीमा से गुजर रहा था, दाने दाने को मोहताज था। अवध क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के कई राज्यों में ऐसे कई क्षेत्र थे जहां आए दिन अकाल पड़ता रहता था और खाद्यान्न की बहुत बड़ी समस्या सामने थी। एक बहुत बड़ा वर्ग था जिसको भूमिहीन कहते, मेहनत मजदूरी का भी कहीं सहयोग नहीं मिल पा रहा था। जब कभी भूखमरी का दौर आता था, इतिहास बताता है कि गांव के गांव एक तरह से आबाद और बर्बाद हो जाते थे, घरों में ताले लग जाते थे, कोई भी व्यक्ति नहीं बचता था। आप उस भूखमरी की, उस त्रासदी की आज कल्पना नहीं कर सकते। उन्हीं दिनों अंग्रेज सरकार ने एक योजना बनाई। इनके उपनिवेश में जो बहुत सारे छोटे छोटे देश थे, नए नए द्वीप, वहां भूखंड तो बहुत अच्छा था, जमीन बहुत अच्छी थी, लेकिन काम करने वाले मजदूर नहीं थे। कृषि टेक्नोलॉजी तब तक नहीं पहुंची थी। इन्होंने एक एग्रीमेंट यहाँ के मजदूरों के साथ साझा किया। वो ये है कि वहां जाकर के आप 5 वर्षों तक, 3 वर्षों तक काम करेंगे, फिर चाहेंगे तो रुक जाएंगे, चाहे तो लौट आएंगे, इतनी मजदूरी, इतना मेहनताना आपको मिलेगा। तो जो कहावत है, मरता क्या न करता, उस एग्रीमेंट से बंध करके ये लोग बंधुआ मजदूर की तरह यहां से गए। उसी एग्रीमेंट से शब्द बना है गिरमिटिया। एग्रीमेंट को कम पढ़े लिखे लोगों ने अपने हिसाब से इसका हिंदीकरण करते हुए एक गिरमिट शब्द बना लिया और गिरमिट से गिरमिटिया शब्द हो। ये गिरमिटिया संसार के बहुत सारे देशों में पहुंचे, मॉरिशस में, फिजी में, सूरीनाम में, गयाना में, टोबैको त्रिनिदाद में, दक्षिण अफ्रीका के देशों में और छोटे रूप से संसार के विभिन्न कोनों में। जहां कहीं इनको अवकाश मिला, जहां कहीं से अवसर दिखाई दिया, तो जाने को तो वहां चले गए, मजबूरी वहां ले गई, इनकी नीयत वहां ले गई, लेकिन वहां जाने के बाद जो यात्राएं उन्होंने झेली, उनकी कथा तो अकथनीय है। इनका जो साहित्य प्रकाशित हुआ है, उनके उपन्यास पढ़िए, इनकी कहानियां पढ़िए, इनकी कविताएं पढ़िए, तो लगता है कि अमानुषिकता की जो चरम सीमा हो सकती है, अधिक से अधिक जितना टॉर्चर दिया जा सकता है,
जिस तरह पशुवत व्यवहार किया जा सकता है, अंग्रेज सरकार जैसा दमनकारी शासन चक्र, उन्होंने इनका खून पसीना जिस तरह निकाला और इनकी मेहनत मशक्कत के बल पर वहां जो अपने उद्योग खड़े किए, जो कृषि कर्म खड़ा किया, वो सब बड़ा रोमांचकारी इतिहास है। इनकी कविताएं और खासतौर से गीतों में इनके बहुत सारे संकेत मिलते हैं कि दिन भर कठिन धूप में भारी मेहनत करते हैं, तोड़ों की मार खाते हैं, झुंड के झुंड जानवरों की तरह इनसे काम कराया जाता है। उसके कारण इनका पसीना सफेद रंग का नहीं, लाल रंग का निकलता है। हमारे साथ के एक बड़े लेखक है अकबर अनंत, लाल पसीना नाम से उनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ है। उस पसीने का रंग सफेद नहीं हुआ करता था, खून ही निकलता था पसीना बन करके। इतनी मेहनत के बाद सायंकाल अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए इन लोगों ने कुछ कार्यक्रम बनाए। उनमें कार्यक्रम था रामचरितमानस का पाठ। किसी पेड़ के नीचे बैठ जाते थे और कहीं से ढोलक जीरा मिल जाता था तो उसको गा बजाकर ये अपना दर्द जी लेते थे, गम गलत कर लिया करते थे। रहने खाने पीने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। 10 बाई 10 की अगर एक कोठरी है तो उसमें 10-15 मजदूर ठूसे जाते थे, वो पैर फैलाकर सो भी नहीं सकते थे। भोजन के लिए 2 बार घंटा बजता था और उस नगाड़े की आवाज के साथ वो लाइन लगाते थे। पता नहीं घंटा भर खड़ा रहना पड़े, 2 घंटा खड़ा रहना पड़े, पर जितनी जहालत हो सकती है सब तरह का अपमान झेलते हुए और सब तरह की मार खाते हुए उन्होंने अपने दिन वहां काटे। इनमें से कुछ तो लौट आए, कुछ बीमारी की हालत में वही मर गए और कुछ इसलिए नहीं आ पाए कि लौटने का पैसा, जहाज का किराया उनके पास नहीं था, तो मजबूरी में वही बस गए। और धीरे धीरे मेहनत करते करते उन्होंने उस देश में अपनी एक जगह बना ली, वो जमीन जायदाद ले ली, फिर उसका और ज्यादा विकास किया। आज आप वहां जाकर देखते हैं, मॉरिशस जाने का मौका बहुत लोगों को मिला होगा, एक स्वर्गीय स्थान जैसा दिखाई देता है। उसको पर्ल ओशन कहते हैं, मोती है हिंद महासागर का। चारों तरफ जो फ्लोरा फाउना है और वहां के निवासी जिस तरह धनधान्य संपन्न है, ये नहीं लगता कि हम में से ही वहां गए हैं। इतने सभ्य, इतने सुसंस्कृत और हर तरह से जो बहुत सारी विकृतियां हमारे समाज में दिखाई देती हैं उनसे मुक्त। वहां चोरी नहीं सुनी जाती है कैसे होती है, वहां यह कल्पना नहीं की जा सकती कि लोग झूठ कैसे बोलते हैं, एक दूसरे के साथ दगा कैसे करते हैं। तो आश्चर्य होता है कि वही भारतीय रक्त थोड़ी दूर जाकर हमसे भिन्न कैसे हो गया, उनका सुसंस्कार कैसे हो गया। दरअसल परिस्थितियां ही इसमें बहुत कुछ अपना रोल अदा करती है। परिस्थितियों से ही मनस्थितियों का निर्माण होता है, तो उस रूप में आज इनकी एक अपनी अलग कल्चर हो गई। ये जो डायस्पोरा है उसका अध्ययन जितनी बारीकी के साथ ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में और जितने विशाल परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा, उससे मानवता का एक नया इतिहास निर्मित होगा। तो ऐसे बहुत सारे देश जो आज भारतवंशी बहुल देश कहे जाते हैं, जहां हमारे भारतवंशी हमारे पूर्वज रह रहे हैं, वे भावात्मक रूप से हमसे जुड़े हुए हैं। यदि उनको हम सुसंगठित कर लेते हैं तो उससे हमारी अंतरराष्ट्रीय राजनीति बदल सकती है, उससे हमारी भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार दिन दूना रात चौगुना हो सकता है, उत्तरोत्तर बढ़ सकता है, बहुत सारी गलतफहमियां दूर हो सकती है। उससे आर्थिक आदान प्रदान के संसाधन, जिसको आप बाजार का विनिमय कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं, तो कई दृष्टियों से ये बहुत शुभ है, बहुत लाभकारी है। ऐसे अध्ययन केंद्र की आवश्यकता बहुत अरसे से महसूस की जा रही थी। बहुत पहले लगभग आज से 30 वर्ष पूर्व की बात बता रहा हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय के अपने विभाग में हमने देशांतरी हिंदी नाम का एक पाठ्यक्रम शुरू किया। उन दिनों हिंदी विश्व सम्मेलन शुरू हुए थे, तो विचार करते हुए कल्पना आई कि क्या ग्लोबल हिंदी लैंग्वेज का कोई अपना स्वरूप हो सकता है, उस विश्व हिंदी का परिकल्प क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा। तो महसूस हुआ कि हमारा देश और हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति मूल रूप से 4-5 भागों में बटी हुई है, कि अलग अलग कई शेप्स है।
एक है जो हमारे पड़ोसी देश है, जो हमारा बृहत्तर भारत था, ग्रेटर इंडिया, उस समय अफगानिस्तान भी हमारे साथ था, पाकिस्तान का तो खैर वजूद ही नहीं था, नेपाल हिंदू राष्ट्र था, तिब्बत हमारे साथ था, म्यांमार हमारे साथ था, श्रीलंका, मालदीव इत्यादि छोटे छोटे बहुत सारे देश ये भारतवर्ष के ही अंग थे, भारतीय संस्कृति के ही परिपोषक थे। तब वह दूसरी प्रकार की उपासना पद्धति आ गई है या संप्रदाय आ गए हैं, विचारधाराओं में परिवर्तन हो गया है, 1000 वर्षों की गुलामी में बहुत बदल हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं अवशेष विद्यमान है। आप सब कुछ तो बदल सकते हैं, लेकिन वहां जो महत्व भारत जो भारतवंशी बहुल राष्ट्र है, वही मानस फिजी, सूरीनाम, गयाना इत्यादि। तीसरे वे देश हैं जहां अप्रवासी भारतीय बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गए। आज आप देख रहे हैं भारत से भिन्न एक बड़ा भारत आपको विदेशों में दिखाई देता है। हमारे प्रधानमंत्री जहां जाते हैं भारतवंशी इकट्ठे हो जाते हैं और फिर भारतवर्ष के जो नारे लगते हैं उसे सुनकर हमारी छाती भी परिचित हो जाती है। चौथे प्रकार के देश वे हैं जिनकी विशेष अभिरुचि भारतीय संस्कृत, भारतीय साहित्य या भारत विद्या में रही। वे भारत विद्या को कई दृष्टियों से देखना और जानना चाहते हैं। बुद्धिस्ट कल्चर की अध्ययन प्रवृत्ति के अंतर्गत बुद्धिस्ट स्टडीज, संस्कृत के साथ जानने की एक इच्छा, उर्दू के साथ जानने की एक इच्छा, हिंदी और हिंदुस्तानी के माध्यम से जानने की इच्छा, यहाँ के फोक कल्चर को जानने की इच्छा, और खासतौर से जो भारतीय दर्शन है, जो हमारा भारतीय साहित्य है, उसको जानने की इच्छा संसार के विभिन्न अंशों, क्षेत्रों में, अलग अलग कई देशों में विद्यमान। मुझे जब कभी बाहर जाने का अवसर मिला तो उनकी ओर से जिज्ञासा प्रकट हुई कि आप हिंदी डिवोशनल पोएट्री पर कुछ बताएं। हम लोग फिदा है उनकी आधुनिकता पर, और मॉडर्निज्म क्या है इसको जानने की ज्यादा कोशिश करते हैं। विखंडनवाद क्या है, संरचनावाद क्या है, इत्यादि इत्यादि, एस्टेटिज्म क्या है, वो कहते हैं हमें तो सुनाइए। इसको सुनते देखते हम ऊब गए हैं। हमको तो बताइए हिंदुस्तान की भक्ति भावना क्या है, भक्ति काव्य की प्रकृति क्या है। तो विशेष रूप से वे इंडोलॉजी को जानने की कोशिश करते हैं, और इसलिए भारत विद्या के बहुत सारे केंद्र उनके यहाँ बने हुए। तो ऐसी स्थिति में जो वे देश जिन्होंने स्कॉलरली इस देश को समझने की कोशिश की, यहाँ के इतिहास को बचाने की कोशिश की, उसको कहीं ना कहीं टेम्परिंग भी की है, बर्बाद भी किया है, लेकिन खुदाई भी कराई है। आर्कोलॉजिकल एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है, यहाँ के इतिहास और दर्शन को जागृत करने की कोशिश की है। तो भारत में एक विशेष प्रकार का प्रमाद बढ़ता जाता रहा है अपने इतिहास के बारे में। यह माना जाता रहा कि इतिहास हमको मोह से बांधता है, और जल्दी से जल्दी मोह मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। इसलिए हिंदुओं में कहीं अपने स्मृति के संरक्षण की कोशिश नहीं की गई, किसी ने स्मारक नहीं बनवाया। वर्ष में एक दिन पितृ विसर्जन कर देते हैं और सामूहिक रूप से उनका स्मरण कर लेते हैं, इतना ही पर्याप्त है। तो इतिहास की हमने काफी उपेक्षा की है। उस इतिहास को इन लोगों ने अपने ही हित में सुरक्षित करके रखा, वो आज आपको प्राप्त हुआ है। तो इसी तरह से तमाम विश्वविद्या से जो इंटरडिसिप्लिनरी अंतर विद्यापरक ज्ञान की शाखाएं हैं, उनको किस तरह से कहां से कैसे प्राप्त किया जा सकता है, यह साधन आपको यही से प्राप्त होता है। यह अंतरराष्ट्रीयता इधर जो हिंदी के विश्वविद्यालय तमाम विश्व सम्मेलन हुए हैं, अब तक 12 संपन्न हो चुके हैं अलग अलग देशों में। वहां बहुत सारे विद्वान एक जगह समवेत होते हैं, एकत्र होते हैं, और उनके यहाँ भारतीय संस्कृति किस रूप में पहुंची है, भारतीय साहित्य किस रूप में पहुंचा है, इन सब की जानकारी हमको बृहत्तर अर्थों में मिलती है। वैसे भी उन्होंने भारतीय साहित्य को समझने की कोशिश की, कालिदास को लेकर के, तुलसीदास को लेकर के, वाल्मीकि को लेकर के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन पर आरंभिक शोध कार्य विदेशों में ही हुए। थियोलॉजी ऑफ तुलसीदास
1918 में लंदन विश्वविद्यालय में पीएचडी का विषय बना था। पालोसा कबीरदास विदेशों से ही शोध कार्य शुरू हुआ। ये कभी डीडी के नाम से हुआ करता था, डॉक्टर ऑफ डिविनिटी, फिर पीएचडी आई, फिर डिग्री डिग्री आई। तो ऐसी बहुत सारी उपाधियां लंदन विश्वविद्यालय से, फिर पेरिस विश्वविद्यालय से, फिर संसार के अलग अलग विश्वविद्यालयों से उसी परंपरा में हमारे यहाँ विश्वविद्यालय खुले और फिर शोध कार्य शुरू हुए। ऐसे ही समीक्षा कार्य, ऐसे ही ट्रांसलेशन वर्क, ऐसे ही कोशकारिता, ऐसे ही अनुवाद कार्य, ऐसे ही पाठ्यक्रम निर्माण। आज विश्वविद्यालय स्तर पर जो हम सीख रहे हैं कहीं न कहीं आदान प्रदान के माध्यम से प्राप्त हुआ। बहुत कुछ हमसे दे गए हैं, बहुत कुछ हमको दे गए हैं, और दरअसल आज इस अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इस विद्या विनिमय की बड़ी आवश्यकता है। कोई भी एक अकेला देश सारे ज्ञान का वारिस नहीं हो सकता है। कुछ हम सोचते हैं, कुछ आप सोचते हैं, और दोनों मिलजुल करके एक दूसरे को बांटते हैं। तो डायस्पोरा का यही सबसे बड़ा महत्व है। अब देखें आपका देश अलग अलग कोनों में कितना क्या बसा हुआ है। मोटे तौर से मानते हैं कि मॉरिशस में आज भी 60% भारतीय है, फिजी में लगभग 40% है, ट्रिनिडाद टोबैगो में लगभग 30% है, सूरिनाम में भी उनका औसत 30% के आसपास है। ऐसे ही ब्रिटिश गुयाना जो अब बदल कर नीदरलैंड में ज्यादा चला गया है, और उसी तरह से साउथ अफ्रीका के बहुत सारे देश। मतलब ये है कि जो आज की पीढ़ी एनआरआई बनकर के विदेशों में जा रही है, इन सबकी संख्या मिला दी जाए तो लगभग 7 करोड़ लोग भारत के बाहर रह रहे हैं। और ये जिधर झुक जाते हैं उधर इतिहास का रुख बदल जाता है, चुनाव प्रभावित होता है, बाजार प्रभावित होता है। इन सबका आकर्षण भारत की ओर इसलिए भी ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है कि ये संसार का इस समय सर्वाधिक आबादी वाला देश है। यह आबादी हमारे लिए कष्टकारक हो सकती है, लेकिन बाजार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और इन देशों में जो इनकी मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी जो फर्में हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, या अपनी आवश्यकता से कई गुना ज्यादा उत्पादन कर रही, उसकी खपत कहाँ करें? खपत के लिए उन्हें बाजार चाहिए, और बाजार की जो भारत की ओर मुंह करते हैं। आज स्थिति है कि कुआं प्यासे के पास आया हुआ खड़ा है, वो अनुरोध करता है कि हमारा सामान आप खरीद लीजिए, और उसके लिए भारत की इज्जत उसके निगाह में बढ़ती चली जा रही। कभी उनसे मांगते हुए हमें गिड़गिड़ाना पड़ता था, आज सामान बेचते हुए वे गिड़गिड़ा रहे हैं। तो बहुत कुछ टेक्नोलॉजी उसका आदान प्रदान कर रहे हैं, मार्केट इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। और संसार की स्थिति यह है कि कोई भी देश अपने में स्वायत्त या स्वतंत्र नहीं है। हर व्यक्ति मुखापेक्षी होता है, कहीं न कहीं दूसरे से मदद लेनी पड़ती है। इसलिए इन सब की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ मॉरिशस का जो गहरा संबंध भारत से है, उसमें आप पाएंगे कि उनके साहित्य में वहाँ मूल रूप से हिंदी साहित्य है, फ्रेंच है, और जो उनके अपने नेटिव है, कुछ डच है, कुछ और देशों से चाइनीज भी काफी संख्या में पहुंच गए हैं। लेकिन मूल रूप से उनका अपना चिंतन और सृजन हिंदी भाषा और साहित्य भी होता है। हिंदी में भी जिस जनपदीय भाषा से ज्यादा प्रभावित है वो है भोजपुरी। तो भोजपुरी को ही हिंदी मानते हैं। खासतौर से उसके लोक साहित्य को भोजपुरी चटनी कहते हैं। चटनी ज्यादा चटपटी होती है, ज्यादा रोचक होती है। उन लेखकों में अभी मैंने अभिमन्यु का नाम लिया, लगभग 60 पुस्तकें हिंदी में उन्होंने लिखी है, जिनमें कावेरी है। वे शबनम उपनाम से कविता करते हैं। अब तो उनका शरीर नहीं रहा, लेकिन उनकी ग्रंथावली प्रकाशित होकर आपको प्राप्त हो सकती है। और उसी के साथ साथ तो उपन्यासकार के रूप में उन्होंने बड़ी प्रतिष्ठा की है। लाल पसीना उपन्यास का भी मैंने नाम दिया। गांधी जी बोले थे, उनका एक दूसरा बड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। वही मुड़िया नाम का एक पहाड़ है, उस मुड़िया पहाड़ को आज भी भारतवर्ष का ही प्रतिनिधि मानते हैं। पहले हमारा पुरखा है, पूर्वज है ये, और उसी पुरखा को देखकर भारतवर्ष की कल्पना करते रहे। तो मुड़िया पहाड़ बोल उठा, ये उपन्यास के माध्यम से भारत की गाथा गाते हैं। ऐसे ही पसीना बहता रहा, लगभग 6 कहानी संकलन है उनके। उसी तरह से संपादक रूप में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है गोविंद जी ने। वसंत पत्रिका के कई विशेषांक लिखा है। जब वे महात्मा गांधी मौका में निदेशक के रूप में काम कर रहे थे, उधर से दर्द क्षेत्र में काम किया है। उसके साथ साथ रिमझिम नाम की एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका उन्होंने निकाली,
बहुत संक्षेप में केवल सूत्र रूप में संक्षेप करता हुआ चल रहा हूँ। हिंदी साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसी तरह से वे खेत खलियान की, हिंदू को खेत खलियान की भाषा कहा करते थे और लोगों में इसको मीडिया की भाषा बनाने, इसको हाइब्रिड से जोड़ने और साथ ही साथ फ्रेंच और अंग्रेजी से स्पर्धा करने, एक बड़ी लंबी योजना उन्होंने बनाई थी। इसके माध्यम से वो राष्ट्र निर्माण का संकल्प लेकर चलते रहे। तो एक एंग्री मैन के रूप में उनकी जो भूमिका रही, उनके कविताओं में आपको नाराजगी के स्वर बहुत दिखाई देगा। कविता की दो पंक्तियां आप देखें कितनी हृदयद्रावक है, मन को छूने वाली। अपने नेताओं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि जो मालाएं तुम्हें पहनाई उनकी रस्सी बनाकर तुमने फांसी दे दी, उनकी हथकड़ियां हमें पहना दी, हमने तो माला पहनाई थी, तुमने उसको ऐंठ कर रस्सी बना दिया और फांसी का फंदा बन गया। ऐसे ही कहते हैं कि कैक्टस के दांतों पर खून के दाग हैं, गूंगे इतिहास ने नहीं सुनाई वो कहानी, किसी ने नहीं सुनी उनकी चीत्कारें, वही थी पहली बूंद पसीने की इस नंगी पीठ पर सहकर बांसों की बौछार। तो ऐसा आक्रोश, इस तरह की वेदना और वो भारतीय संवेदना, वो तत्व उनकी कविताओं में, उनकी कहानियों में भरा पड़ा है। यही स्थिति आपको दिखाई देगी सोमदत्त बखोरी की रचनाओं में। बड़े प्रसिद्ध वहाँ के शिक्षक रहे हैं, पत्रकार भी रहे हैं। 1921 से 1991 के बीच वो नाटक, कहानी संकलन, संपादन, विभिन्न क्षेत्रों में बहुत काम किया है और बराबर वे वहाँ के साहित्य का नेतृत्व करते रहे। तो ऐसे ही बहुत सारे लेखक, मुनीश्वरलाल चिंतामणि, लक्ष्मी नारायण चतुर्वेदी, वासुदेव विष्णुदयाल, 1905 में जमाना नाम का अखबार शुरू करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, वहां हाथ से लिखते थे। फिर साइकिल मशीन आई, उसके माध्यम से पत्रिका शुरू की। तो दिन भर को समाचार बटोरते थे, शाम को लिखते थे, अपने जाति जनता में बांटते थे और भारतीयता को बचाते थे। ऐसे ही प्रहलाद रामशरण, ऐसे ही अन्य कथाकारों में, लेखकों में रामदेव धुरंधर, राजीरामन, ब्रजेंद्र भगत मधुकर जो वहाँ के राष्ट्रकवि कहलाते हैं, सुचेता रामधुनी, वीर सेन जागा। मेरे कहने के तात्पर्य है कि दर्जनों साहित्यकार हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़े हुए हैं, लोक साहित्य से जुड़े हुए हैं, संस्कृत से जुड़े हुए हैं। पत्रकारिता में जो इनका योगदान है उसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, ने उसके लिए अलग एक सत्र रखा है। दूसरा महत्वपूर्ण देश है फिजी। अभी अभी वहाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन, भाषा विश्व सम्मेलन नांदी में इसी 15-17 फरवरी के बीच में हुआ था। वहां पर 1878 में लगभग 33,000 भारतीय पहुंचे थे पैसिफिक ओशन के भीतर एक छोटे से द्वीप में, जिसमें कुल मिलाकर के लगभग 322 द्वीप खंड है। उन सारे आइलैंड को मिलाकर के देश बना है फिजी। इसकी संस्कृत भी तो बड़ी मिक्स्ड कल्चर है, मिली जुली संस्कृति है, जिसमें उनके आदिवासी भी है, जिसमें चीनी भी है, जिसमें यूरोपीय भी हैं, रोमन कल्चर और मुगल कल्चर वहाँ की पुरानी संस्कृतियां हैं, उसी के साथ अपनी भारतीय संस्कृति। यह प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध देश है। चारों तरफ वो नारियल के बड़े हरे भरे खेत हैं और गन्ना उत्पादन का बहुत बड़ा क्षेत्र है। मॉरिशस भी गन्ना उत्पादन का क्षेत्र रहा है। वहां के मजदूरों को जिनको ले जाया गया था, ये कहा गया था कि श्री राम ने जब मरीच का वध किया था तो उसको अपने बाण से 7 समंदर पार फेंका था, वो यही मॉरिशस में जाके गिरा था। इसलिए मॉरिशस के पत्थरों के भीतर, उसके इनसाइड रॉक्स, उसके तहों में सोना ही सोना भरा हुआ है। जो खोद लेगा उसको सोना मिल जाएगा। एक लोकगीत वहां आज गाया जाता है, सोनुआ के कारण आए न मरीच देश। सोने के चक्कर में हम लोग फंस गए थे और मरीच देश आ गए थे, और यहाँ आकर सोना तो हराम हो गया और उसके साथ साथ हमको ये यातना है। तो खैर वो गन्ना उत्पादन क्षेत्र रहा है, जिसको ये लोग व्हाइट सुगर कहते हैं। व्हाइट सुगर ड्रग के रूप में नहीं, गन्ने को ही वेद सोना मानते हैं, वही इनकी आर्थिक व्यवस्था का मुख्य कारण है। और तमाम उद्योग, उसमें नेविगेशन भी है, चंदन का बहुत बड़ा उद्योग वहाँ होता है, पर्यटन का बहुत बड़ा क्षेत्र वो है,
ऐसे ही तमाम तरीके की संस्कृतियां जो उनके भीतर टोंगा, समोआ, पाली और पॉलिनेशन वगैरह वगैरह ईसाई मत का प्रभाव काफी है, लेकिन सनातन धर्म आज भी विद्यमान। कई देशों में आप आएंगे उनके घरों में और कुछ हो न हो एक झंडा जरूर लगा हुआ होगा सनातन धर्म का, और छोटा एक मंडप या मंदिर बना हुआ होगा, चाहे हनुमान जी का हो चाहे देवी जी का हो। आज भी उस सत्यनारायण की कथा बैठ के सुनते हैं हर पूर्णमासी को। जमीन पर बैठकर प्रायः पत्थर के ऊपर खाना खाते हुए आपको देखेंगे, धोती कुर्ता में उनको आप देखेंगे। नई पीढ़ी तो काफी मॉड हो गई है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग आज भी इन सारी संस्कृतियों से और इन पूरी परंपराओं से बहुत व्यस्त है। परिणाम के विश्व हिंदी सम्मेलन में भाई तो केवल नाम से पहचान कर कि दीक्षित है तो जरूर ब्राह्मण वर्ग के होंगे। वहां के एक सज्जन मनुहार करते हुए अपने घर ले गए कि भोजन हमारे यहाँ चलेंगे। मैं था साथ में पंडित श्री लाल शुक्ल जी, लखनऊ के बड़े प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार, आप जानते हो, संगीतकार, और साथ में कमलेश्वर जी थे। 3 प्राणियों को उन्होंने आमंत्रित किया, बाकायदे बिठा करके जिससे पंडित का भोजन कराया जाता है, हाथ परोस करके भोजन कराया के पहले तिलक किया, प्रणाम किया, चलते हुए दक्षिणा दी। हम दोनों को तो दक्षिणा पैर छू करके दिया, कमलेश्वर जी को केवल तिलक लगा करके एक लिफाफे में बैठा दिया। आपसे उन्होंने पूछा कि ये परिवर्तन क्यों? मैंने कहा ब्राह्मण को पैर नहीं छूते है। आज भी ये पुरानी परंपरा उनके बीच विद्यमान है। फिलहाल जी थोड़ा सा मुना रहे थे कि ब्राह्मण रूप में हम यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन आप जैसा भी कह रहे हैं इनकी भावना का आदर करना चाहिए। तो ये विद्यमानी परंपरा भी उनके भीतर वो आस्था और रीति रिवाज विद्यमान है। ये फिजी के लोग अमूमन आपको दिखाई देंगे बहुत लंबे चौड़े हट्टे कट्टे काले रंग के, लेकिन उतने ही विनम्र, उतने ही सेवाभावी, उतने ही मेहनती। उनकी क्षमता को देख करके सचमुच आश्चर्य होता है। वो कहीं कबीरपंथी हैं, कहीं साईं बाबा के समर्थक हैं, कहीं हिंदू सनातनी समाज से प्रभावित है, मलेशियन भी उसके भीतर बहुत सारे हैं। तो अलग अलग बहुत सारे रूप हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में भारतीयता से जुड़े हुए हैं। स्वभाव से बड़े कठोर परिश्रम वाले भी और बड़े मिलनसार हैं। यहाँ कई संस्थाएं आपको दिखाई देंगी। प्रायः हर देश में सनातन धर्म परिषद नाम की एक संस्था होगी, हर देश में आर्य समाज की कोई न कोई संस्था होगी, कहीं कहीं उनके कबीरपंथी समाज की संस्थाएं मिल जाएंगी। बहुत सारी पत्रिकाएं निकाल रहे हैं, अलग अलग बहुत तरह की संस्थाएं इन्होंने खड़ी कर रखी है, और उसका इतिहास विकास लिखने के लिए इधर बहुत आमादा है। बहुत अच्छी पुस्तक वहाँ मेरे फीजी द्वीप में मेरे 29 वर्ष कोताराम सनाट ने आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व लिखी थी। वो पुस्तक पूरे इस इतिहास की साक्षी बनती है। एक बहुत अच्छे कवि उस देश में पाए गए फीजी में, जिनका नाम है कमलाकांत मिश्र। कमलाकांत मिश्र जी लगभग 11 वर्षों तक गुरुकुल कांगड़ी में रहे, यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके गए और उन्होंने आयुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करके वहाँ वैद्य का भी काम किया, उसके साथ साथ शिक्षण का भी कार्य किया। उन दिनों हिंदी कविता में छायावाद का दौर था, उनके ऊपर भी छायावाद का इतना गहरा प्रभाव पड़ा, और सचमुच जो कविताएं उन्होंने लिखी वो प्रकृति सौंदर्य से भरी हुई, दर्शन दिग्दर्शन से भरी हुई, ऐसे प्रेम, सौंदर्य, रहस्य, चेतना, चित्तवृत्ति का उदात्तीकरण। 2 पंक्तियां आप सुन लीजिए। कहते हैं भारत की याद आ गई है, यहाँ से जब अपने देश गए लौट करके, आज मथुरा की न जाने क्यों आ गई है याद सहसा, छा गया मन में नशा सा, बढ़ गया उन्माद सबका, वो मधुर यमुना जिसमें स्निग्ध जल का जल पड़ा है, वो मधुर बड़ी भूमि जिसमें कृष्ण ने से भरा है। तो ऐसे ही प्रेम की बड़ी भावुकतापूर्ण कविताएं उनमें दिखाई देती है। एक पंक्ति है कि आज तो स्वीकार कर लो ये हृदय का प्यार मेरा, कल न जाने ये हृदय कब कहाँ किसके पास होगा, वो हृदय में आज तुम कल और किसके पास होगा। तो ऐसी बड़ी संवेदनशील रचनाएं, प्रकृति प्रेम से जुड़ी हुई रचनाएं, युगबोध से जुड़ी हुई रचनाएं कमलाकांत मिश्र जी की दिखाई देती है। 4 खंडों में उनकी ग्रंथावली हिंदी में प्रकाशित हो गई।
ऐसे विवेकानंद शर्मा जी वहाँ के बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं, वहाँ के मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं, डिप्टी मिनिस्टर भी रहे हैं। बहुत सारा साहित्य उनके नाम से प्राप्त होता है, जोगेंद्र सिंह कंवर के नाम से, प्रोफेसर सुब्रमणी इत्यादि बहुत अच्छे अच्छे रचनाकार। सूरीनाम जो आज यहाँ से लगभग 16,000 किलोमीटर की दूरी का महाद्वीप है, कैरिबियन कंट्री कहलाता है। अमेजन नदी के किनारे दक्षिण अमेरिका में। वहां हमारे पूर्वज न जाने किन परिस्थितियों में फंस के गए, इतनी लंबी यात्रा करके, लेकिन जाते हुए आपको जगह जगह सड़क पर दिखाई देगा एक गठरी सिर पर रखे हुए कोई पुराना भारतीय ग्रामीण वेशभूषा में, और उसमें लिखा होगा हम तो भारत के गुण गाए, भारत के गुण गा रहे हैं, जहां से आए बाबा और माई, हमारे माता पिता वहीं से आए हैं। वहां पर भारतीयों को मुल्की कहा जाता है। मुल्की माने अपने मुल्क के रहने वाले, अपने मूल देश के रहने वाले। 1873 से 1916 के बीच लाला जहाज से 64 किस्तों में ये लगभग 33,000 लोग बारी बारी से वहां पहुंचे थे। वहां उन्होंने जंगल काट काट करके भयावह प्रकृति में अमेजन नदी के किनारे, जहाँ बड़े जहरीले मच्छर होते हैं और बहुत तरह के वन्य जातियां, उनसे संघर्ष करते हुए उन्होंने अपना प्रवास किया। धीरे धीरे अपनी संस्कृति प्लांटेशन का काम किया, उसके साथ साथ संस्कृत का भी प्लांटेशन किया, सनातन धर्म का वहां उनमें स्थायित्व किया, और जगह जगह पर अपने फोक कल्चर को, आज भी आपको मिल जाएंगे आभा गायकी वाले लोग, सत्यनारायण कथा सुनने वाले लोग, बिरहा गाने वाले लोग, रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग, उनकी मंडलियां बनी हुई हैं। वहां पर उन्होंने भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखा। आज भी 170 के आसपास हिंदू मंदिर उस देश में पाए जाते हैं। भोजपुरी और अवधी दोनों भाषाओं का उपयोग करते हैं, और उसी के साथ साथ अपनी सरनामी संस्कृत को भी वे बचाए हुए। ऐसे ही ट्रिडी और टोबैको, जिसको त्रिदौत कहते हैं, इस देश में बहुत बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी भारतीय समय समय पर वहां पहुंचे। कैरिबियन ओशन, साउथ कैरिबियन ओशन का देश है, जहां आज भी लगभग 14 लाख के आसपास जनसंख्या है। उसमें स्पेनी भी है, अफ्रीकी भी है, यूरोपीय भी है, लेकिन भारतीय काफी डोमिनेंट है, काफी प्रभावशाली है। वहाँ प्रधानमंत्री कमला प्रसाद जी, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय आचार संहिता से जुड़ा हुआ है, यहाँ के साहित्य से और यहाँ के सामाजिक रहन सहन से। वहाँ भारतीय विद्यावान और सनातन धर्म इन सब के अध्ययन होते हैं। ऐसी नेचर एंड हॉलिडी है, जिसको पहले हम यूरोपियन गेट कहा करते थे, यूरोप का प्रवेश द्वार है। ये बहुत कुछ माइग्रेट जो स्थानांतरित होकर के आए हैं उस देश में, तो गौतम इत्यादि वो सभी लोग हैं। और उन्हीं के साथ साथ त्रिनिदाद टोबैको, फिर सूरीनाम, फिर मॉरिशस और फिजी, इन सारे देशों में आप पाएंगे कि हमारे ये जो गिरमिटिया है, जो एग्रीमेंट के अंतर्गत वहां गए थे, इन्होंने अपनी संस्कृति को वहां सुरक्षित रखा। और समाप्त करता हूं, अपनी संस्कृति को वहां सुरक्षित रखा, अपने साहित्य को, भारतीय भाषाओं को, हिंदी बहुला है लेकिन इसके अलावा आपको वहाँ मलयालम भी मिल जाएगी, पंजाबी भी मिल जाएगी, मेरी भाषाओं, उर्दू भाषाओं और अंग्रेजी की भी जानकारी मिल जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि भारतीय संस्कृति समग्र रूप से इन देशों में पहुंची है। वे आपके प्रतिनिधि रूप में वहां कार्य कर रहे हैं, अब काफी सशक्त हो गए हैं, भारत के प्रति बड़ी आत्मीयता महसूस करते हैं। जैसे ही बातचीत में इनको सूचना मिलती है कि आप भारत से आए हैं, तो भाव विभोर हो जाते हैं, हमारे मुल्क से आए हैं, हमारे मुल्क माने हमारे पूर्वजों के देश से आए हैं। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय छवि जिस सांस्कृतिक स्रोत के माध्यम से बनी है, उसका उत्तरोत्तर विकास करना हमारा, आपका, सबका कर्तव्य है। संस्थाओं की यही सबसे बड़ी भारतीय सेवा हो सकती है, यही की सबसे बड़ी उपयोगिता है। उस कार्य को आपने उठाया है, इसलिए आप सब बहुत बहुत आभार।
Thank you, sir. Your enthusiasm and energy added a wonderful touch to the keynote address. With immense pleasure and without further ado, let me invite Shri Shraddhanand Harinandan Singh Ji, CEO Kala Pani Academia International, for presidential address. Also, I invite Vidya Gangadeen ma'am and Deepti Agarwal ma'am on the stage. काफी मस्त है। मेरे गर्मियों साथियों, प्रार्थना मैं जरूर करना चाहता हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्यालय विश्वविद्यालय और I am going to present a PowerPoint program because what Professor has said, I wanted to say to Dr. Satish Rai too, that he has already said everything. Basically he spoke only in Hindi because we are Girmitiyas who can speak Hindi. Why? Because they didn't got the chance. मारा गया है उन लोगों के भाषा को, उन लोगों के संस्कृति को, उन लोगों के सभ्यता को मारा गया है। हम लोग सुरीनाम में जहाँ पर Netherlands were the colonizers, they had an agreement and we call that contract. इसीलिए सुरीनाम we are calling them Katrakis and all over the world they are calling Girmitiya. I will short my summary, Professor Ji. You have seen 3 books. One of Dr. Satish Rai. He is inspired. He is inspiring all everywhere around the world. The German. I give him an applause because without him I was not here. So, and thank you, Professor Omkar ji. मैं तो आप लोग सभी को नहीं जानता हूँ. He is the man here in India who is thinking about the Girmitiyas. There are 50 million relatives of the Girmitiyas living here and 10 million descendants abroad. I am wondering, are these 50 millions ever thinking about their relative abroad? पीड़ा होता है, मेरा आंसू हुआ है, क्योंकि my grandfather, you see, मैंने जैकेट वैकेट नहीं पहनना, मैं फकीर बन के आया हूँ, क्योंकि मेरा आजा यहाँ से फकीर बन के गया हुआ था. He could not return. He was 20 years old, Thakur Kisundayal Singh from Bihar, and we are going to find this place, and we also have a bit of food. When he came in Suriname, same day he had to go cook syrup, sugarcane syrup, 8 or 10 hours a day. What is going to happen this man after 5 years? मेरे बेटे बैठा हुआ, he became Kara. वो मर गई. He couldn't come.
बड़ी धन्यवाद है कि जो बेटा बनाए उसके मैं भी पोता हुआ हूँ. Well, let me tell you, there is a lot to do. Mrs. Professor, जो अभी कहा है निशी पांडे जी, अब कहाँ आ गया? आपको तो याद होना चाहिए. अच्छा ठीक. She has mentioned a very important paradigm, students to you, and that is transnational migration. So that is my father, मेरा तो बाप है, and I am the second. छोड़ो उसको आप जानते हैं. Dipti, can you read the next one? मैं आपको बता दूं. The next slide. These are. At first, I would like to highlight some quotes proactive. After Kumar Bajwani, British organism created the internship system to pay for the abolition of labor in 1983. Dubai 2021, 4 people of lower caste suffered in India, and there was no other possibility of social mobility than immigration. By 2022, Britain has a history of solving problems by transporting prisoners to their colonies. Thank you. These are some key points. What we are going to do now, we want to present indentured system just like slavery, crime against violence against humanity. And that's why we have prepared a resolution, and after that we are going to present. Next one. These are the keywords, bro. Post-slavery, indentureship, dislocation, relocation, multiculturality, post-indenture, Homogeneity. Standardization. That's what we were doing now. Okay, homogeneity, Homogenization. hybrid Identity. naturality, Okay. nationality, and representative Thank you. justice. These are the keywords in the book, and I'm going to tell you somewhere else. Next one. What is post-slavery? Post-slavery started when the abolition of the slave trade and slavery came to an end. The British Empire introduced the Indian contract system to compensate the European settlers by providing the hired Indian indentured servitude as substitute for the same slave work. Yes, now you can see. For the same slave work. Why is only slavery declared as crime against humanity? मेरा आज कोई काम करना पड़ा. Why? So we are now here to select information, to generate the information. I see Dennis is laughing. He's but they are busy. So this is a part of after this. You see, the crime begins here already in this process. Go on, next one. Indentured servitude is a form of labor where an individual is bound under contract to work without a salary to repay a loan within a specific time frame. Starting 2022, the Indian indentureship was bond labor under contract with a payment of Negro wage, free shipping, housing, food, and medical care during the contract. They were not the settlers' property, but were subject to penal sanction. All right, you see the difference between the slavery and the indenture. The slavery was forced trade, labor trade. The indentureship was unbounded, and so it's the same bounded बना हुआ दबावा हुआ काम. Next आपने बहुत मिला पर धन्यवाद. Next one.
Slavery was a forced labor system for a lifetime, and the descendants were slaves. The indentured system was bound labor until under penal sanction. This means punishment for any breach of the contract by the plantation owner. Plea for restorative justice need to recognize the colonial British indentured system as crime, violence against the Girmitiya's humanity. Referring to the analysis of the Leah C. Randall, the draft resolution for second separate column. It doesn't need explanation. Go on. Indentured labor was the British system of unfree labor used by colonial powers. These are persons we have already, right? Argues that many indentured laborers experienced the same violence and exploitation as slaves in Africa. No civil but criminal law provisions apply to breach any rule. In all colonies, Girmitiyas were often subject to physical and mental abuse. Trafficking and forced labor is recognized as a violation of human rights. Forced and bonded labor is identified as a form of slavery, condition of exploitation, facilities for. My dear ladies and gentlemen, I hope you do understand this. Next one, please, because the time short. And Yes, reported they were not welcome in the neighborhoods in India. They were forced to seek refuge in poorer areas. Unfortunately, in Paravati, Bhavan, Aral in Bihar, was not find a single South African Indian whose life has been happier after returning. The British government in India paid less attention to the repatriates than the departed. So, no, I'm talking about the relatives here. We are not talking about Trinidad now, people here. When the 30%, 1/3 part of the Girmitiyas could repatriate, they were not welcome here. They weren't. But they were discriminated. And that is not my God. You know, I think. Next one. बोलो चलो मैं फिनिश कर दो इसको फिनिश कर दो Despite the atrocity against the servitude have been systematically committed worldwide. However, these have not yet been officially recognized as violations of international human rights according to the report of the World Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobic and Related Intolerance. The substitution of slave labor for starvation wages, for housing, bad medical care, physically punishment, summary execution, territory mass murder, was that member concealment of mass grave, rape, and abuse of women, slaughter, contact with India, violation of the Treaty 1870. This part of the migration follows after the arrival in Suriname. Okay, next one. Anyhow, these are the 5 processes in the transnational migration process. Okay. It is one. Post-indentured process concern events. Because there is no time. They have become multiculturality. Okay. Multiculturalism. And multicultural. These are different Canadian book. Okay. This is Suriname. Bye bye now. Thank you. I want to call our Dr. Satish ji and to say thank you, Vicky. You are going to review the book. आ जाइए इन्होंने ये पुस्तकों का पढ़ के बोलेगा कि ये झूठ बोलता है ये सच बोलता है अरे ये जो बोला ये तो महान है that is your job maybe you can send दो तीन तुम्हें बोल दो ना मंच को नमन करते हुए आप सभी शोधार्थियों का समय की कमी है ज्यादा औपचारिकता नहीं निभाऊंगी सबसे ज्यादा धन्यवाद
आनंद जी का, जो सबसे पहले उन्होंने मुझे पुस्तक भेजी पढ़ने के लिए, तो मुझे इससे अवसर मिला। बहुत ज्ञानोपयोगी ज्ञानवर्धक पुस्तक है। मैं बहुत शॉर्ट में बता रही थी उसका संदेश अपनी एक कविता के माध्यम से, जो इस पुस्तक को पढ़कर मैंने लिखी है। क्यों ना हम भी अपना ले अफ्रीका का उबांटू, क्यों ना अपना ले हम भारत का वसुधैव कुटुंबकम, जो देता है संदेश एक धरती एक परिवार। क्यों ना हम भी अपना ले अफ्रीका का उबांटू, जो कहता है आई एम एज वी आर। क्यों ना हम भी अपना ले भारत का वसुधैव कुटुंबकम, जो देता है संदेश एक धरती एक परिवार। क्यों ना ढल जाए हम सूरीनाम की ब्रोमिक की दयारी में, बना ले रंगीन फूलों का बगीचा, जहाँ खिलते हैं फूल भांति भांति के, इंडो सरनामी, जावानीज, पुर्तगाली, अफ्रो सरनामी, पोर्चुगीज या मरून। रहे सब प्यार से सौहार्द से, बांटे एक दूसरे की संस्कृति खान पान, करे आदर एक दूसरे के धर्म का, ना समझे किसी को छोटा या बड़ा। फिर ना होगा कोई विश्व युद्ध, फिर ना होगी दास प्रथा, ना उसका नया गिरमिट रूप। आओ सब मिलकर ले संकल्प एक धरती एक परिवार का, सबके साथ सबका विकास का। लेखक ने अपनी इस पुस्तक में ये संदेश देने की कोशिश की है। आप ये देख सकते हैं, होमोजेनाइजेशन इन कल्चर। इसके मुख्य प्रश्न पर उन्होंने बहुत सारे, जो सूरीनाम में बहुत सारे तरह के जो लोग मैंने बताया, जावानीज, पोर्चुगीज, इंडो सरनामी जो लोग रहते हैं, लेकिन और वो किस तरह से प्यार और सौहार्द से रहने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन फिर भी समय समय पर उनके बीच में काफी डिफरेंसेस आते रहते हैं। तो लेखक ने इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को, नीति निर्धारकों को सुझाव देने का भी प्रयत्न किया है। उनके अनुसार हम अगर शिक्षा पद्धति में कुछ प्रयत्न लाएं और प्रयत्नकारी परिवर्तनकारी शिक्षा पद्धति में सभी को एक साथ संवाद के लिए प्रोत्साहित करें तो फर्क आ सकता है। धर्म और संस्कृति को अगर हम आपस में साझा करें तो हम मिलजुल करके रह सकते हैं। दूसरा, वहां उन्होंने एक उदाहरण भी दिया है, जैसे सूरीनाम में एक शहर है अर्नहेम, वहां के सभी समुदाय के लोग इकट्ठे होकर अपनी गली को हरा भरा बनाते हैं। उसी प्रकार विभिन्न समुदाय भी अपनी संस्कृति खान पान को परस्पर बांटकर एकता बढ़ा सकते हैं। कला और संस्कृति भी परस्पर सौहार्द बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अंत में सिर्फ इतना कि बहु निर्जातीय समाज की बहु संस्कृति में एक रूपता का होना विषय को लेकर पुस्तक बहुत से अनछुए पहलुओं को खोलती है, जिसे आप इस पुस्तक को पढ़कर आप आनंद उठा पाएंगे। शोधार्थियों के लिए, नीति निर्धारकों के लिए, अध्यापकों के लिए पुस्तक बहुत ज्ञानवर्धक है। इतनी सुंदर और ज्ञानोपयोगी पुस्तक लिखने के लिए धन्य जी को धन्यवाद। साधुवाद। Thank you, Shraddhanand sir, Vidya ma'am, and Deepti ma'am. We are grateful for your presence at this event. Now I invite Mr. Dennis Ram Dahin, founder and CEO, Vihar Foundation, USA, and Professor Archana Tiwari ma'am, Professor Department of Western History, University of Lucknow, to pay tribute to late Shri Vasudev Pandey ji, former Prime Minister, Trinidad and Tobago. Good morning. Namaskar. I'm honored to be here to present the obituary of the late former Prime Minister of Trinidad and Tobago, Mr. Vasudev Pandey. In honor of the late Vasudev Pandey, born 25th May 1933 and departed 1st January 2024. Mr. Pandey was a Trinidad and Tobago statesman, lawyer, politician, trade unionist, economist, and actor who served as the 5th
Prime Minister of Trinidad and Tobago from 1995 to 2001. He was the first person of Indian descent, along with being the first Hindu to hold the office of Prime Minister of Trinidad and Tobago. His would be the first Hindu state funeral in Trinidad and Tobago. Basil Pandey was born on the 25th of May 1933 in Julian Village, Princestown, British Trinidad and Tobago, into an Indian Trinidadian family to Kisunde and Harry Sukhchand Pandey. He was the oldest of 5 children born to his parents, and on his father's side, he had 2 elders, half-sisters, and 1 younger half-sister. His parents and grandparents were immigrants from British India who immigrated to Trinidad as indentured laborers under the Indian indenture system. His maternal grandmother was from Laxmanpur, a farming village of the Azamgarh district in the Bhojpur region of the present-day state of Uttar Pradesh in the Hindu belt of North India, which he visited on a state trip to India in 1997 and met with his extended family members. In honor of this great and accomplished late son of the soil, a descendant Girmitiya Indian indentured, we will offer 2 minutes of silence in respect. Let us reflect. Thank you. Well, this is a very important moment for our seminar. Nonetheless, we cannot imagine to proceed forward without paying a homage from the heartland of the Girmitiyas, to our Pravasi brother and friend. Late Shri Basil Pandey was the 5th Prime Minister of Trinidad and Tobago from 1995 to 2001.
He was the first person of Indian descent to hold the office of Prime Minister of the Twin Island Caribbean nation. His grandparents had come to Trinidad in the early 1900s when the indentureship was about to end. His grandmother was from Lakshmanpur, a farming village from the Azamgarh district in Uttar Pradesh. Pandey was born to Kisum Dai and Harry Chote Sukhchand Pandey in Princestown, Trinidad on May 25, 1933. His parents were illiterate and remained on the estate as gardeners. He was an intelligent boy and excelled as a student at St. Julian Presbyterian Primary School, walking 4 miles each. Pandey was an achiever. He pursued education as the key to escaping poverty. Pandey briefly worked as a sugarcane weaver on an estate in South Trinidad, and his early jobs prior to university included being a primary teacher and a civil servant at the port. As a university student in United Kingdom, Pandey earned a diploma in drama from the London School of Dramatic Art in 1960 and a degree in law in 1962 from the Inns of the Court of Law. He graduated with a Bachelor of Science in Economics from the University of London in 1965. He had a short stint as an actor with cameos in 9 Hours to Ram in 1963 and The Winston Affair in 1964, along with a couple of British television performances. Pandey also held job as a construction labourer, clerk at London County Council, and electrician to support himself financially. Pandey received a Commonwealth scholarship to further his studies at Delhi School of Economics, but he opted to return to Trinidad due to family commitments and practiced law. He began his political career in 1965 when he joined the Workers' and Farmers' Party. Pandey won the Kuva North seat in 1976 general elections. His defining moment came in 1995 when he became the first Prime Minister of Indian origin of Trinidad and Tobago. In an interview in 1997 on a state visit to India, he termed his election as the Prime Minister as crossing the racial Rubicon. Pandey was the chief guest of 1997 Republic Day Parade. As a custom, Pandey and his wife, Oma Pandey, called on the then President, Dr. Shankar Dayal Sharma, on January 25, 1997. He then visited Lakshmanpur in Azamgarh and commented, "The scene could have been Koroni or Dibe, that is a city in South Trinidad, surrounded by lagoons, sugarcane fields, and rows of pigeon peas. A large crowd of villagers from Jaunpur, Bindra Bazar, Lalgari, Mohammadpur, and Rani Ki Sarai came to visit him. They waited for several hours to catch a glimpse of Pandey. He admitted that poverty in India and expectation of opportunities in Trinidad forced the Indians to migrate. The Trinidadian historian Shamsuddin traced his roots to a Yadav family. To this, he commented that Indians migrating to Trinidad were aware that a surname of a higher caste, Pandey, had greater significance. Thus, there were Brahmins by birth and there were Brahmins by vote. Pandey was known for his humor and by the name Silver Fox due to his signature hair. He was known for his advocacy and encouragement of Indo-Trinidadian causes. A number of agreements were also signed during his visit in 1997. His visit legitimized and popularized the trend of Purkhon ki Desh ki Yatra. The visits to India assumed a strong religious fervor. Pandey candidly admitted that geographical distances between India and Trinidad had caused the dependence of Trinidad on United States of America and the various Latin American countries. Pandey died on January 1, 2024 in Jacksonville, Florida, USA, at the age of 90. His final rites were done per Hindu customs.
and was the first Hindu state funeral. The various dignitaries of Trinidad and Tobago graced his funeral. President Christine Kanglu, Prime Minister Keith Rowley, Chief Justice Ivor Archie, the leader of opposition Kamla Prasad Desesar, and Devraj Bansaraj, brother-in-law and Indian classical singer. Ram Kisoon, Ram Mohib, and soca artist Kees Stephen Thriller sang as a mark of homage to Pandey. Pandey was cremated at the Shore of Peace cremation site at Mosquito Creek, South Oripoche. Pandey is survived by his four daughters, Naila, Michaela, Nicola, and Vatsala, and his second wife, Oma Pandey. His first wife, Norma Muhammad Pandey, passed away in 1981. Pandey's youngest brother, Subhas, said that Pandey was the blue-eyed boy of his mother and light and glow of the family. He could do no wrong. The Sanatan Dharma Mahasabha in Trinidad has decided to rename the Shiva Boys Hindu College to Basudev Pandey Shiva Boys Hindu College in the honor of the former Prime Minister. This gesture is like a tribute and recognition to the role played by the former Prime Minister in reshaping the destiny of Trinidad. The name is an act of assertion of cultural identity and shared heritage of Trinidad. A former member of parliament and government minister, Vasant Bharat, has started a petition called on government to change the name of Pyarko International Airport to Basudev Pandey International Airport to honor his efforts for his country. Thank you. Thank you, Mr. Dennis Ramdain and Professor Archana. We are delighted to have with us Dr. Amit Mishra, an associate professor at the School of Global Affairs. Dr. Mishra's research interests encompass Indian labor diaspora, causes and consequences of labor mobility. He is currently finalizing a manuscript on reading the movements of Indian indentured laborers from the perspective of global history. Sir, we would be honored if you could grace the esteemed audience with few words at this significant event. Thank you. Can you hear me? Yeah. Thank you for this honor. I consider it a privilege to be here as a guest in the inaugural session of the International Seminar on Descendants, Girmitiya, Past, Present, and Future. Dignitaries on dais, colleagues, esteemed participants in the conference from all over the world, good afternoon. I see this as a very timely and opportune kind of a moment for all of us who somewhere or the other engaged with the research on Girmitiyas. This is very, very important as a student for me, for all of us. Not only the studies of the Girmitiyas, but larger, the kind of Girmit diaspora in particular and studies of Indian diaspora in general. After very, very comprehensive and distinguished keynote speaker and a very passionate address by a very, very prominent person of Girmitiya descendant, Harinandan ji, whom I had the opportunity to meet very recently in Suriname in Moritz conference. There's not much to say. So I'm also this is as a chief so-called chief guest. I still feel humbled and not really that I want it. Not much to say, but what I try to do is in a few words, in a few minutes which I have, I'll try to look at and reflect upon some of the, how we look at and how we see the very history and the very present of the Girmitiyas and their descendants. There are multiple lenses which we use when we try to engage with them scholarly. One is this lens of pain, trauma, sorrow, etc., which the keynote speaker
and the presidential remark both highlighted. The other is, which I would like to particularly say a few words here is about optimism. There's a lot of trauma, yes, there's a lot of pain, and none of us would try to erase that from the large and the big history of the Girmitiyas and their descendants. But what happens? Because pain is a very, very important human, part of the human life. But then pain, is if it overwhelms, it blinkers our vision towards the future, and that's very much part of the conference. So how do we see the future? The future is when we see and we find a lot of opportunism. Optimism. Sorry, it's a terribly bad mispronunciation. There's a very famous Fijian poet, Mohit Prasad, who there's a lot of talk on literature. I'm not really here as a literature person, but poetry, it has that power to explain a lot, which otherwise a student of history is needs to see. The optimism which these Girmitiyas were going with, the optimism which they carried within that pain, within that trauma, within that sense of displacement. He writes, I caress an empty thought as I clean out a brass plate. That was the reality. They had of thin dal and broken rice. That was the reality. But then he uses the metaphor of mango seed. He says, I'm carrying a mango seed to plant at the end of this voyage. This was the optimism, and this is where the future, this is where you all, some of you who have come from the descendants of Girmitiyas, this is the optimism which led you from there to here, But then, when we are talking about optimism, we cannot really say, and we are talking about present. There are a lot of achievements and accomplishments, but then there's a lot of frustration, there's a lot of disillusionment. And that takes us to a very, very noted scholar from Caribbean. Actually, he's one of the pioneers of this Caribbean literature in the larger, set of English literature and English poetry, called David Derrida, pioneers. He's in UK, Warwick. He's the pioneer and the founder of the Warwick Center on Caribbean Literature. He says that fine, we have done a lot, we have accomplished a lot, but also the very much present is that it reminded him and many like him from Caribbean, and wherever the Girmitiya descendants present is a troubled present, like Fiji, like Suriname, long back, our Caribbean, and many other places. And the riverboat packed with crying and dead, like the old days come back of lash and chain. So when we are celebrating the present and we are trying to look forward to the future, but we also should not forget that the present, which in some sense has the colors of accomplishment, has also the shades and the grayer shades of disillusionment. So the present is a mixed present. What I see is an optimistic future. There's another thing which, in the post-colonial scholarship, particularly when studying diaspora and the larger communities which have the past and present as a dialogic, where the past always lives with the present. There is no escaping. Often the post-colonial scholarship looks at this as a kind of nostalgia. You are remembering because your present is comfortable. You are driving a Merc or a BMW somewhere in Seattle or New York, or even in Fiji, Suva or Port Louis. You remember the bullock cart, and the remembrance of bullock cart is often seen as nostalgia. You are remembering the thin dal and the broken rice with nostalgia. But no, a very prominent post-colonial scholar, Homi Bhabha, reminds us
that communities like Girmitiya's, he doesn't particularly mention Girmitiya, but the larger post-colonial displacement he is talking about, the sense of displacement and exile, that past, present together with a hyphen is basically an art of necessity. It is not nostalgia anymore for them. They have to live with their past. That's where, a very noted scholar from Caribbean, Derek Walcott, in his Nobel acceptance speech, reminds us in form of fragments of memory. The memories live with you and live with you all your life. And that is where you created what is called these imaginary homelands. So today when I go to Trinidad, I find a village named Gorakhpur. That's part of their living. Or when I go to Mauritius, I find a tiny pond named as Ganga Talab. That's also part of their living. So this is a hyphenated and a dialogic past and present, and the fragments of that memory which help them sustain, which help them reach where they are today. This is also very important because this is the last lens which we have to be careful about, is the lens of who they are, the very pertinent question of their identity. Trinidadian, Mauritian, Indian Mauritian, or something else. So that is where, this, and also Salman Rushdie in another context. I'm mixing up too many things, don't get confused. See it like a spontaneous rambling. Salman Rushdie reminds us that this search of identity, this very question of who we are, is not a question which often we fancy and we try to say that I am a Trinidadian. It's very much actually what happens is that for many of these people, and Girmitiya is a very, very important part of that many these people, that it's basically an obligation. If we look at the history, and that takes me to the history of Indians in East Africa, that takes me to the history of Indians in Fiji, in Trinidad, that how do you remember and how do you identify yourself? You identify yourself in hyphenated identity, Indo-Mauritian, Indo-Trinidadian, Indo-Fijian, and that are Indians in Africa, the famous movie, Mississippi Masala kind of narrative. Then there is a question on your loyalty to that new land. That new land, which Vasanji reminds us is not a new land, but still it's a new land and it's your adopted land. By the way, it's not your new land. And it's not a new land for you because you are there for 150 years. You are very much the citizen of that country. But the larger new kind of nationalist narrative, the Africanization, the nativization, etc., reminds you that your hyphenated identity works against you. But then your hyphenated identity and the first part of the hyphen is all that what you have, is all that what helped you to sustain. The Ganga Talab is what helped them to sustain in Mauritius. The Muria Pahad and the myth around that Muria Pahad and the remembrance of Rama's banishment and Rama's Vanvas is all what they had and is what helped them to survive. So if they give up their hyphen, then who are they? I leave with this question. Thank you very much. Thank you for this honor and thank you very much. I look forward to a very, very productive conference ahead. And I congratulate the organizers and the department and the University of Lucknow for this wonderful event. Thank you very much. Thank you, sir, for your words. Today we had an opportunity to hear your thoughts on diasporic narratives and question of identity, and this will surely going to encourage us in future events in shaping our creative acumen and academic endeavors. Now I invite our organizing secretary, Professor Omkar Nath Upadhyay, sir, Professor, Department of English and Modern European Languages, for formal vote of thanks.
Thank you, Dr. Paride, for providing me this opportunity to express my vote of thanks. So, at first, I express my deep sense of gratitude to Indian Council of Social Science Research, New Delhi, to sponsor this international seminar, to organize in University of Lucknow under the stewardship of Professor Alok Rai himself, our Honorable Vice Chancellor, who might not be here with us, but his blessings are always with the department, and he could not come because of his other busy schedules. I also extend my gratefulness to all foreign dignitaries from US, UK, Trinidad, Australia, and other nooks and corners of the world, like Dr. Satish Rai, Dr. Sadhan Harnandan ji, Dennis Ramdahin, Rajneshwar Lal ji, Vidya Parvati, Puniti Maharaj, Ajay Chabra, Krishnel, Indrani Ramprasad, Vimla, and others who spared their time to participate in this conference, to share their emotions and bonding with his homeland, as India. I have no word to say anything for my students and scholars because they ceaselessly work spontaneously day and night for so many days for their own self-intrinsic pleasure. Swantah Sukhaya. So I bless my students as well. The other dignitaries, Dr. Vimlesh Kanti Verma ji, Dr. G.S. Jha sir, Dr. Deepak Pandey, Dr. Nutan Pandey, Dr. Sunanda Verma from Singapore, and so many scholars. Dr. Rakesh Pandey ji, I may forget the name, but list is very long. So I am very fortunate to all these dignitaries who are present here to grace the occasion. I am also thankful to University administration for providing all kinds of support, boarding, lodging, financial. So I am ever grateful to them. I am also grateful to media persons, electronic media, as well as print media, to spare time to among my faculty members. It's not self-appraisal, but no function be complete without the contribution of Professor Nishi Pandey. She is the gem of the department, and we wish her benign presence and contributions and guidelines to the third generation of the scholars. So with these words, once again, I express my deep sense of gratitude to you all and request you humbly to participate in all 3 days brainstorming sessions. Thank you once again. Thank you, sir, for your guidance and unwavering support.
I request you all to stand in the honor of national anthem. जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय जय हे I request you all to please proceed to the foyer of Malviya for the high tea. Thank you so much. मुलाकात होती है